Dear students, let's start the second portion of the first chapter of history, the rise of nationalism in Europe. The title of this portion is The Making of Nationalism in Europe. Making of nationalism, how to the idea of nation or the nation state is going to be established or going to be structured. It is a long process of social, political, economic struggles. So let's start in this in detail. You have to already in mid 18th century Europe, to find out the no nation state at that time. Basically in the mid 18th century, almost 1750, mid 18th century, almost 1750. There is no any nation states in this new or modern parameters. Germany, Italy, Switzerland are divided into the kingdoms, duchies, small counties or jagir, and cantons rules their autonomous territories. They are ruled like independent territories. Monarchies which lived a diverse kind of peoples. The peoples they speak different type of languages. Not the language as the same. There are many verses and dialects of the languages. They have not any collective identity and collective culture and united struggles. So they spoke different type of languages. Austro-Hungarian, Habsburg Empire, different regions, peoples included Alpine region, and this Alpine region and aristocracy were predominantly German speaking, and also the Hungary, half of the population migrate throughout the Polish. Besides their dominant peoples lived within the boundaries of empire, and also the Bohemians, Slavs, North Slavs, Croatia, Croats, Romanians, Transylvania. So there are various types of counties, monarchies, lads, feudals, criticals, different kind of usually promote. They are enthusiastic to promote the sense of political unity because they are fragmented politically, and such of their binding themselves only one, that they are ruled by a emperor. That's the only one. A emperor is एक सम्राट के अंदर थे, but they are different kind of people. They are different identity. They are different type of aspirations. So how can nationalism and idea of nation state emerge? कैसे हुआ, कैसे संभव हो पाया? This is the very important question about. Let's start to emergence of this. The aristocracy and the new middle class. Then after the new development arrived in society, socially and politically, landed aristocracy was very dominant because they are depends upon land and the land related revenue and the resources. So they are very importantly powerful in these regions, and there are many divisions among them, but they are owned estates, countryside, town houses, बड़ी बड़ी इनकी जागीर हवेलियाँ होती थी, शहरों में घर होते थे. They spoke French. If they related to the Polish, Italian, or German, but they want or they will to speak French to be depicted as their elite, just like in present or in the British era in India. The elite class was willing to speak English. Just like in Europe, the elite class is willing to speak in French. So their families were connected to the marriage. The powerful aristocracy was, however, numerically very small group, but they are very politically very powerful. उनकी संख्या भले ही कम थी, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली थे. दे मेजोरिटी एंड पॉपुलेशन वाज मोर रिप्रेजेंटेटिव. मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो था, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थे वो किसान थे. दे हैव इन द वेस्ट एंड ईस्ट, दे आर वेरी डिफरेंट.
In the west area, the majority of the land was formed by the tenant and small owners. याद रखें importantly, यूरोप का जो वेस्टर्न पोर्शन है जहाँ पे बेसिकली जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, इन सारे पोर्शंस में जो भी किसान थे, जो भी पीजेंट्स थे, वो ज़्यादातर अपनी खेती या तो टेनेंट्स के रूप में करते थे या लैंड स्मॉल लैंड ऑनर्स है। टेनेंट्स मीन्स बटाईदार, जो किसी के खेती को रेंट पे लेके करता है, बटाई पर टर्म एंड कंडीशन, स्मॉल ऑनर्स थे। बट इन ईस्टर्न सेंट्रल यूरोप, जो कि ये सेंट्रल और पूर्वी यूरोप में, लैंड होल्डिंग्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय वास्ट स्टेट्स एंड दे आर कल्टिवेटेड बाय सर्फ्स। सर्फ्स मीन्स स्लेव्स, सर्फ्स के द्वारा यानी गुलामों के द्वारा, दासों के द्वारा खेती की जाती थी। तो आप सोचिए समाज कैसा होगा, एक ऐसा समाज जहाँ बड़ी बड़ी जागीरें हैं और वो सब लैंडलॉर्ड्स के हैं, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो या तो गुलाम है या खेत में या सर्विस देने वाले हैं लैंडलॉर्ड्स को। तो सोसाइटी वाज वेरी बैकवर्ड इन द कंपेरिजन विद द वेस्टर्न, दे आर, because in the western Europe, the landlords have admitted that they have right to property, so you have given the lands and they have bond with the agreement to the like the tenants. So the society of western Europe and the society of eastern and central Europe are totally very different, and this kind of situation also being depicted in present time also. The western part of the central Europe industrial at that time of the industrial production was produced that trade meant to growth and town and encourages to commercial classes. After the industrialization and industrial revolution made in England, this is slowly this is trickled down and expanded in France and Germany. So the industrial development, industry is going to set up and work up a new social group. This is called middle class, the working class population, the industrialists, businessmen, professionals. The central and eastern Europe also be a smaller number till 19th century, but among the educated liberal middle class and national unity falling to evolution of aristocratic privilege and gain popularity. So the peoples are going to demand that to privileged class and the privileged, their special treatment should be abolished and restructure the political and social order, and weightage and power should be given on the basis of merit, not the basis of birth. This is an important demand by the liberals, by the new middle class emerging, just like working class you call this industrialists, businessmen, professionals. So this was a very important transition, a changing society which accelerated the economic development, and further this economic development accelerated the political changes and demand of the political changes. So what was the did the liberal nationalist stand for? Liberal nationalism से आप क्या समझते हैं, इसका क्या मतलब होता है कि what is the meaning of liberal nationalism? The liberal word derived from the Latin word liber. Liber means freedom, आज़ादी, free. So they want to freedom from what? From by whom? To politically they emphasize the concept of the government by the consent. The major foundational demand of liberals to be stated that the political structure and the government should be made by consent, यानी कि सहमति की सरकार होनी चाहिए। सरकारें जो हो वो जनता की सहमति से बने और सहमति से काम करे, इस तरह की चीज़ें and to demand for. They want to abolish the autocracy and clerical privileges and constitution and representative government throughout the parliament. वो चाहते थे जो clerical privilege है, जो clergy class है, जो चर्च पर डिपेंड करता है वो, और जो नोबिलिटी है उनकी प्रिविलेज समाप्त की जाए, कॉन्स्टिट्यूशन बने और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाई जाए जो कि लिबरल बेसिस पे शासन करे, जो कंसेंट के आधार पर शासन करे। 19th सेंचुरी तक आते आते लिबरल स्टेट्स इनवाइडेबली ए प्राइवेट प्रॉपर्टी। 19th सेंचुरी तक लिबरल जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते थे कि हाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी को राइट मिलना चाहिए। येट इक्वलिटी एंड बिफोर you know the land did not necessarily stand for the universal suffrage, ये तो नहीं था, but you called to be the revolutionary France was marks the first political experiment in the liberal democracy. पहली बार हुआ
राइट टू वोट दी गई, गेट इलेक्टेड, एंड देन आफ्टर ये गैदर्ड की गई acquire of execution property land ought to be many from brief period of this Jacobins did have played ultimate to enjoy suffrage. हाँ, जैकोबिन्स के पीरियड में थोड़ा सा समय आया, 9th क्लास में पढ़े होंगे कि उन्होंने एक मैनहुड सफरेज दिया था। हाउएवर नेपोलियनिक कोड तक आते आते जो डेवलपमेंट हुआ उस तक आते आते वीमेंस की पोजीशन बहुत रिड्यूस कर दी गई। वीमेंस की पोजीशन बहुत रिड्यूस हुआ क्योंकि उन्हें एक स्टेटस ऑफ माइनर डाल दी गई, यानी कि सारी की सारी महिलाएं जो हैं वो समझिए कि नाबालिग मनोवृत्ति की मानी जाएगी। माइनर मतलब कि वो मैच्योर नहीं माने जाएंगे। दे हैव टू बी डिपेंड ऑन बिफोर द मैरिज ऑन द फादर एंड आफ्टर द मैरिज दे हैव डिपेंड ऑन द हस्बैंड। सो दे आर डिपेंडिंग क्रीचर्स, दे हैव नॉट independent identity. So it was a very ridiculous sense of attention that time, but it was the mandate time of that period. And 19th century the 20th century तक आते थे, women have promoted men organized opposition a movement during the political rights movements ने भी अपना संघर्ष करना शुरू किया। तो इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम फॉर मार्केट। अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में देखें तो आपने समझ लिया राइट टू गवर्नमेंट टू बी कंसेंट, और सोशल लेवल पे हर तरह की एट्रिसिटी समाप्त होनी चाहिए, एक इक्वलिटी होनी चाहिए, जेंडर्स इक्वलिटी होनी चाहिए, पोजिशनल इक्वलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा इकोनॉमिक स्फीयर में देखें तो फ्रीडम ऑफ लिबरलिज्म इट मीन्स द फ्रीडम ऑफ मार्केट, यानी कि बाजार में स्वतंत्रता, यानी कि किसी प्रकार की सरकारी नियंत्रण नहीं चाहिए। एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन और गुड्स एंड कैपिटल जो हो फ्री फ्लो हो। और 19th सेंचुरी तक आते आते एक स्ट्रॉन्ग डिमांड हो गई इमरजेंस मिडिल क्लास का, जो ये मांग करने लगा। जर्मनी स्पीकिंग फर्स्ट हाफ 19th सेंचुरी नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेशन के तहत जो चेंजेस किए गए उसका भी लाभ मिला कि नेपोलियन ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस किया था, सब कुछ इजी कर दिया था, सारी जो वेट मेजरमेंट यूनिफाइड किया था नेपोलियनिक सिविल कोड हम लोगों ने पढ़ाई है 1815 का। तो कन्फेडरेशन जो उसने बनाया था जर्मन प्रिंसिपलिटी का जो कि 39 स्टेट्स को मिलाकर बना था, ये प्रोसेस टू द लार्ज करेंसी, एक बड़े वन करेंसी को और वेट और स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से मार्चेंट जो है दूर दूर तक ट्रैवल करने लगे। हेम्सबर्ग एम्पायर, नरिंगबर्ग सेल गुड्स और इससे 11 के कस्टम ड्यूटीज बैरियर्स को पार करके जाना पड़ता था। अब 5% तक ईच कस्ट ड्यूटी पर लगता था। ये सारी ड्यूटीज़ को लेवीट को धीरे धीरे समाप्त करने की मांग शुरू हो गई, जिसकी वजह से जो व्यापार हो ईजी हो। क्लॉथ जैसे कि मान लें क्लॉथ जो था वो कहीं पर मेजरमेंट की जो कंसेंट थी वो डिफरेंट थी, एक ही पाउंड कई जगह पे अलग अलग जो मेजरमेंट दिखाते थे, नेरिमबर्ग में क्या और वहाँ क्या, तो इससे कि जो बिजनेस व्यापार था, जो ट्रेड और कॉमर्स था, वो उसको बहुत मतलब कि हैम्पर होते थे, उसको बहुत परेशानी होती थी। तो इससे निजात पाने के लिए इन सब को यूटिलाइज, इन सब लोग को एवोल्यूश करने की बात की गई। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कमर्शियल क्लासेस जो थी वो आर गुड फॉर द क्रिएशन यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। जो कमर्शियल क्लास थी उनका दिमाग था कि एक पॉलिटिकली भले फ्रेगमेंटेड रहे लेकिन एक इकोनॉमिक टेरिटरी मजबूत बनाया जाए, जहां कस्टम यूनियन बनाया गया जिसे जेलेवरियन कहा गया था, फॉर्म्ड इनिशिएटिव प्रसा एंड जॉइंट टू बी मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट को और प्रसा को मिला के बनाया गया। आगे चलकर इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए और बहुत सारी करेंसीज को एबोलिश करके 30 करेंसी को एबोलिश करके 1-2 करेंसी में कन्वर्ट किया गया, और जिससे कि नेटवर्क बेटर हुआ, रेलवे एस्टेब्लिश की गई, और ये हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट और यूनिफिकेशन ऑफ नेशंस और वेव ऑफ द इकोनॉमिक नेशनलिज्म एंड स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनल सेंटिमेंट ग्रोइंग एट द टाइम। और इस वजह से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जब आई, जब आर्थिक रूप से लोगों के बीच में एक स्मूथनेस आया, एक स्ट्रेंथ आया, तो एक नेशनल सेंटिमेंट जो था वो जागने लगा। तो इसका भी लाभ हुआ जब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का आना और फिर सोशल स्ट्रक्चर में, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में मिडिल क्लास का इमर्ज होना और उनके द्वारा कई तरह की डिमांड करना, जिससे कि समाज में परिवर्तन का दौर शुरू होता है। एक न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 के बाद एक नया कंजर्वेटिज्म कैसे आता है कि देखेंगे कि जो ये सब है डिक्लाइन ऑफ नेपोलियन की बात होती है। नेपोलियन 1815 में यूरोपियन गवर्नमेंट ड्राइवन बाई द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म यानी कि कट्टरपंथीता से चलती थी,
और जिसमें जो लोग थे वो मानते थे ओल्ड इज गोल्ड, जो कि मोनार्किकल ऑर्डर और फ्यूडल सिस्टम में बिलीव करते थे। दे बिलीव इन मोनारी चर्च हेरिटरी प्रॉपर्टी फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड मोस्ट कंजर्वेटिव हाउएवर दे प्रोस्परस एंड रिटर्न टू बी द सोसाइटी द प्री रेवोल्यूशनरी डेज। ये तो जानते थे कि फिर से सोसाइटी को प्री फ्रेंच रेवोल्यूशन फेज में तो हम नहीं लेके जा सकते, लेकिन फिर भी वो बहुत सारे चेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए भी इन डेवलपमेंट को थोड़ा स्लो रखना चाहते थे। सो द इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्की एंड यूड बी स्टेट फॉर द मोर मॉडर्न आर्मी efficient bureaucracy dynamic economy and evolution of feudalism serfdom should be strengthened and autocratic monarchy in Europe। ये जो नेपोलियन के द्वारा जो चेंजेस किए गए हैं कि मेक श्योर दैट इफेक्टिव मॉडर्न आर्मी बनाई गई, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी जो बनाया नेपोलियन ने, ये डायनेमिक चेंजेस जो आए इसने फ्यूडलिज्म को समाप्त किया, सर्फडम को समाप्त किया, इसने बाई एंड लार्ज ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज को मजबूत किया। और क्योंकि नेपोलियन भी तो बाद में अपने आप को उसने मोनार्की घोषित कर दिया था, तो फाइनली 1850 तक आते आते रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर ब्रिटेन रसिया प्रसा ऑस्ट्रिया कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन। नेपोलियन को उन्होंने हराया और मेट द वियना, और वियना में बैठ कर उन्होंने कांग्रेस की, जिसे वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। उस समय ऑस्ट्रिया का चांसलर जो था ड्यूक मेटरनिक, वो सबसे बहुत ही बड़ा यूरोप का एक मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियन स्टेट्समैन था, और उसी के नेतृत्व में वियना कांग्रेस हुआ। और जिसमें कहा जाता है कि ये जो ट्रीटी ऑफ वियना हुआ 1815 में, जिसके तहत फ्रांस की बहुत सारी टेरिटरी उससे ले ली गई नेपोलियन के वार के बाद। नेपोलियन जो हार गया, बॉर्बन डायनेस्टी को फिर से वहाँ इस्टेब्लिश की गई, जो लुईस 16 के बाद से जो उसने हटा के अपनी डायनेस्टी इस्टेब्लिश की थी। और फिर सीरीज ऑफ स्टेट सेटअप किए गए फ्रांस की बाउंड्री पे, ताकि फ्रांस जो है फ्यूचर में कोई एक्सपेंशन ना कर सके, उसको एक बफर स्टेट्स के रूप में उसके किनारे इस्टेब्लिश किया गया। और बहुत सारे किंगडम्स नीदरलैंड इंक्लूडेड बेल्जियम नॉर्थ जेनेवा एंड पिडमोंट वगैरह, प्रसा जो था वो एक इम्पॉर्टेंट जर्मन स्टेट था, उसकी टेरिटरी को अनटच्ड रखा गया है। जो नेपोलियन ने 39 कन्फेडरेशंस बना के रखे थे, उसको ऐसे ही रहने दिया गया, ताकि आगे चलकर ये जर्मनी एक कंट्री के रूप में इमरजेंस के लिए एक पाथ फाइंडर का काम कर सके। नेपोलियन लेफ्ट उस इलाके को छोड़ दिया गया, तो रसिया को पोलैंड के बहुत सारे पार्ट्स दे दिए गए, प्रसा के पोर्शन दे दिए, सैक्सनी के पोर्शन प्रसा को दे दिया गया। इंटरवेंशन ऑफ मोर रेस्टोर मोनार्कीज को जहाँ तक संभव हो सका रिस्टोर किया गया, और नेपोलियन को ओवरथ्रो करने के बाद एक कंजर्वेटिव ऑर्डर फिर से यूरोप में इस्टेब्लिश किया जाता है। कंजर्वेटिव रिजीम जो था सेटअप जो हुआ वो 1815 was and tolerant to criticism and dissent. It was by nature is intolerant, so they have curbed the activities, questioned the legitimacy of autocratic government. So it was a conservative regime, so they are not agreed to listen or the criticism or dissent against him. So it is started to the censors and protection and restrictions upon the control of newspapers, books, and play and songs, and reflected to the liberty of the freedom. So by and large, this is the startment of new era in Europe, to associated with the French Revolution. Any kind of development, any kind of modern and liberal activity, they are associated with French Revolution. The new conservative regime is going to vanish or going to destroy them. But the liberals and the radicals people are not to be the agree to just come on them, not agree to uh, stop or their activities. So they remain remain active in manner to underground, and liberal nationalists criticize new conservative order and freedom of the press. And lastly, the revolutionary was being at the time of 1815. That time the conservative regime was more powerful in Europe. They started the popularity and mobilization of liberal nationalist underground. So in this consent, the most important person was you call the Giuseppe Mazzini. A secret society is made, and revolutionary has time to time commented to oppose the monarchical form of establishment. वियना कांग्रेस को वो लोग अपोज करते थे,
And revolutionary solves a certain nation state necessary part of the struggle for freedom. Okay, nation states ही हैं जो उनका जवाब दे सकता है. So we have to structure or restructure our country as a nation state. So the born of the Geneva in वहाँ उनका जन्म हुआ, and Giuseppe Mezzanica, he was a very important. He was a powerful organizer in the sense he made two major organizations work for the liberal nationalism throughout the Europe. First one is Young Italy and second one is Young Europe. And remaining revolution, he subsequently founded two more important underground society. First one is called Young Italy, and second one is called Young Europe. This is very important organization. It was structured by Giuseppe Mazzini. And Poland, Italy, German states, Mazzini believed that the God we have instituted nation to the natural units of the mankind. गुस्से मेजनी का मानना था कि ईश्वर जो है उसने अगर हमें एक अलग अलग कल्चर संस्कृति का के रूप में बनाया है, तो उनका ये मानना भी है कि हमारी डिफरेंसेस भी प्रिजर्व होनी चाहिए, तो ईश्वर की इच्छा का हमें सम्मान करना चाहिए. सो वी हैव टू वर्क फॉर द पैचवर्क ऑफ स्टिल ऑफ किंगडम. सो दे फर्स्ट फॉर द यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन द वाइडर अलायंस ऑफ द नेशंस. उसने एक सपना देखा कि हम सब अलग अलग नेशनलिटीज़, अलग अलग नेशन स्टेट के रूप में स्ट्रक्चर्ड होंगे और फिर अपने आपस में एक फैटर्निटी के रूप में एक रिपब्लिक यूरोप के रूप में सर्वाइव करेंगे. सो दे हैव मॉडर्न सीक्रेट सोसाइटी, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, एंड दे ऑल सीक्रेट सोसाइटी वर्क to make the nation state in their country and associate to make a pan-European organization against the conservative regime throughout the Europe. And Mazzini retended the opposition of the monarchy and vision of the democratic republics fragrant to the conservatives. जो ये democratic republic के जो विजन्स थे वो हमेशा फ्राइटेंड करते थे कंजर्वेटिव्स लोगों को. सो Mazzini just described as the most dangerous enemy of the social order, our social order. इसके लिए इसीलिए Mazzini के बारे में सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हुए ऑस्ट्रिया के चांसलर डिक मेटरनिक ने कहा था कि द Giuseppe Mazzini was the most dangerous enemy of our social order, means the social order of conservatives, the social order of monarchical order, social order of autocracy. And Giuseppe Mazzini was become the pathfinder and the leader of liberal nationalism in Europe. नेक्स्ट पोर्शन में हम आगे के चैप्टर को देखेंगे. थैंक यू.